आवाज मांगते हैं सर. Excellent connection. मेरे ऑफिस के फोन आ रहे हैं ना, कैसे दे दूं? Now I'm starting, please. No noise now. It has started. We will just begin the session in couple of minutes.
18 participants. सर नमस्कार। नमस्कार राकेश जी। और कैसे हो सर? परफेक्टली फाइन। आप बताएं कैसे? बस ठीक है सर, ठीक है ठीक। थोड़ा सेशन डिले हो गया आई थिंक। हाँ थोड़ा सा हो गया सर। राइट राइट, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सो वी वेट फॉर सम मोर टाइम टू। नहीं सर आप स्टार्ट कीजिएगा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। ओके। वो जो भेजा था मैंने कल, वो तो रास्ते में। Okay. You can see the screen. Yes sir, yes. Okay. Yes, sir. You can hear the voice. Yes. Yes, sir. Wonderful. Okay. Today we have a very important session that is on managing resources, time, and priorities. So, very good afternoon to all of you, and let's begin our journey. Okay, let's today straight away come to the topic that is resource management. Now, if you see the bookish definition of resource management, that simply says stocks or supplies of money, material, staff, and other assets that can be drawn on by a person or an organization in order to function effectively. A very simple definition. So anything, either it is a manpower or it is the it is the materialistic things, either it is money, anything which can be drawn by a person or the organization in order to function effectively. Okay. Now, it further goes on and says that understand which resources are in short supply and focus on them. What it says,
understand which resources are in short supply and focus on them. How many of you agree? How many of you agree? I can't Yes, see. sir. Correct, sir. Correct, sir. Short Okay. supply means sir limited supply, na? Limited Yes, resources. yes. Of course, of course. So, your videos are only limited. Only limited people videos I can see. No problem. See, I don't mind you keep your video on or not, because Mr. Manoj had said in the opening session that please keep your video on. Now this is a after lunch session, and after lunch, if you don't keep video on, I don't mind, but keep your eyes open, please, because after lunch it is very difficult to keep the eyes open. Right. So, is there anybody who does not agree with this, or who does not have consent on this statement, that understand which resources are in short supply and focus on them? This is what book says. So you all agree, right? We have to manage each and every resources, but we have to primarily focus on the which is limited. We have to I think primarily focus on which is limited, right? Okay. Let's see. This is exactly what people say, and this is what everybody believes. Let me see whether I can change your thinking a bit. Suppose you earn 2 lakh rupees per month. Suppose you may be earning more or less, whatever. But just imagine, assume. Assumption in communication is not allowed, but in mathematics or in other things, we can assume. So assume you earn 2 lakh per month. You have to buy 100 gram of sugar, right? You have to buy 100 gram of sugar. Shop across your house next door. Like we have shops in the colony. That gives you 4 rupees 6 for 100 gram, right? 60 rupees a kg. And shop 1 kilometer away gives you for 5 rupees 100 gram. And shop 2 kilometer away gives you rupees 4. Which one will you buy? Go for first one, sir. First one. Oh, okay. Because time is also important for me. Yeah. As I am earning 2 lakhs per month, so I have to manage that time, some my official activities and other activities also. Right. Exactly. Wonderful. What's your name, ma'am? Sir, Bina Rawat. Beena This may be Rawat. the quantity of sugar. If it is more sugar, we would have gone for the 2 kilometers. Okay. As the quantum of sugar required is only 100 grams, Right. we can go for the nearest. Yeah, exactly. So that's the point exactly I want to make. Like 1 rupee kya maine rakhta hai, isn't it? Exactly. That's what our psychology is. When we earn 2 lakh rupees, 1 rupee kuch nahi hai bhai, isn't it? 1 rupee is nothing. So wonderful. So what I wanted to communicate has gone through. Now, 1 rupee does not matter. But when you earn 2 lakh rupees, does 600, 800, 1200, does that matters to you? Yes. Yes. Oh, okay. Now, see, if you have to buy just 100 gram, then you lose 1 rupee. But if you keep on buy 100 gram every day, or every week or every month, and if you count for a year, then you will be losing 600 rupees without you realizing it. Without you. देखो आजकल क्या होता है, आजकल आपने बिग बास्केट देखा होगा. Big basket is very common. After the COVID, they have become very popular, because we don't go out and we get the daily needs at home. So they are very, what they charge? They charge just 2 rupees. 2 rupees per delivery, and we don't mind paying that. Why should we mind paying, 2 rupees per delivery? So that is 600 rupees a month, 2 rupees a delivery, 60 rupees per month, and 720 rupees per year. I know 1 or 2 rupee does not matter, but when somebody says, "Oh, you paid 1,000 rupees extra on what you would have got," okay, I really buy your point. You have to see
whether you have time or not, whether the conditions are favorable or not. Then you take the right decisions. Wonderful. One more question. When do you drink water? When we are thirsty. Simple. Or someone advise it to take some time, Huh? like morning. In Yes. the morning, we will take on someone's advice to take every day morning 1 liter of water, like that. Some Yeah. medical Somebody. experts, someone will advise us. Right. Even Right. without requirement, also we'll take it that time. करेक्ट. सो इफ समबडी सेज कि यार आपको थर्स्टी हो या ना हो, बट मॉर्निंग में एक लीटर पानी पी लो, Pani pid. it will be good. So it is not that we drink water only when we are thirsty, but we drink water when we are even not thirsty. Yeah. Right? Now, if any of you are science student and they know a little bit of biology, very, very hard to find, because you most of you are technical people. So you are maybe engineers or having the technical background. But if you know a little bit of biology, biology says that thirst is a very least kind of priority for our body. And when our body is almost 10 to 15% dehydrated, then the thirst triggers. So when you feel thirsty, that means your body cells 10% at least they have died because of the water. That is dehydration. So because lack of water, your 10% cells have died because your body was busy performing other functions, other vital functions like managing the brain, managing the heart, managing the lungs, liver and all that stuff. So they does not care about. And cell to kya bante rehte hain. It's like 1 rupee in 100 grams. So it does not matter. So similarly for body, a little bit of cell dying of dehydration does not matter. Right? But if you want, it's your body. Right? It's your body. You can help support your body. Drink water when you are not thirsty. How does it sound? Does it sound sensible? Does it sound vague? How does it sound? Drink water when you are not thirsty. Yes? How does it sound? Yeah. Yeah? Sir, आप तो पी रहे हैं सुबह 1 लीटर. So you are on the right track. No worry. How about others? Beena ji, Santosh. Sir, that resources, it is useful for long, whole day. Huh. When I am not thirsty and taking water, it is good for long run, long day. Wonderful. Because this time resources are not required, but long run we required, and this time we take the water or resources. Right. They may be cheaper to gain them. Okay. Okay, that is one. So, I mean, accepting that we should drink water when we are not thirsty will do one thing, that, like you don't need water, so that's not a requirement, but you are drinking water to support your body, that you will save those 10% of the cells dying. And like it is 1 rupee per 100 gram sugar which you are wasting. Same way, 10% of the cells dying. जब आप पानी पियोगे तो body will have to make those 10% cells again. So body will have to work again. So imagine every day, every time when you are thirsty, you are stressing on the body's energy resource. Because body requires energy to perform any function. So every time you are stressing on the resource. If you drink water when you are thirsty, if you do not let your body go to the thirst, you will never feel thirsty and your body cells will never die because of the dehydration. That is one. Number 2. What happened? This is a beautiful lawn which you own. Okay, you can assume that this is your private lawn, and you also have this lawn, this one, right?
You have both the lawns. One is a dry grass lawn and another is absolutely lush green lawn. Now, you have option of using water only in the one lawn. Either this one or this one. Which one you will water? Sir, green one. Green one, sir. Are you sure? Yes, sir. All of you? Why? Myself. Because it is already that is already dried means that is already end. वो खत्म हो गई है, उसको पानी देने से कोई फायदा नहीं है. इसको अगर हम देते रहेंगे तो ये उगता रहेगा. This is my. By the time we water the brown one, the green one will turn brown. Wonderful, wonderful, wonderful. So now, is your mind little thinking of the resource definition? What the book says? Book says that you handle or you focus on the resource which are in short supply, or it should be you should focus on the resources which are abundantly available. See, green grass. Wonderful. Here resources is the water, no sir. How you are saying it is grass? Huh? You are saying resources is the water. How grass is the resource here? Yeah. So how you are using your resources exactly? So money is water. Money is resource. Water is resource. Your health is resource. Your time is resource. See what happens when you utilize your time when it is abundantly available to you. You will never feel short of time. When you manage your money when it is abundantly available to you, you will never feel shortage of money. When you manage the green grass, you will never have the dry grass. Health is a resource. When you manage your health, when you are healthy, not when you are sick. Not when you are sick. If you are sick, then anybody will have to take care. You will have to take bed rest and 14 days leave and all that stuff. But if you manage your health when you are healthy, you will never fall sick. So, think. You can go. Both the definitions are with you. So either you can focus on the resources which are in short supply, right? Manage those, or please make sure that you don't let that kind of situation comes in your life, comes in your profession, comes in your any field, right? If that situation will not come, you will never face any shortage of resources. So in a nutshell, please focus on the resources when they are abundantly available. Don't waste it. चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हो, right? Even if it is 1 rupee, please don't waste it. If you can. Like Binaji said, if I don't have time, that's important. Because we all believe time is money. Right? So it will be unwise for me to lose my 10 rupees time and gain 1 rupee, right? So one has to be very, very somebody's mic is on, so whose mic is on? Sir, somebody's mic is on. I can't figure out who's that, but he needs to mute his mic. One minute. Can somebody see whose mic is on, please? Mr. Anthony Pratap. Mr. Anthony Pratap, can you please mute your mic? My God. Sir, can somebody call Anthony Pratap and tell him please mute his mic? Rishi ji?
నీకైనా ఈ రూమ్ అంటే ఆ రూమ్ ఈ రూమ్ అంటే ఇక్కడ దాకా కళ్ళు మూసుకున్నాడు ఈ వాటి దాని కింద Sir, you can advise the coordinator. Rishi ji, minutes కి అలారం పెడతాను నువ్వు ఎక్కువసేపు are you online? 30 minutes చెల్లి లోకల్కి వెళ్ళాను I think it is. Thank you so much. Okay, so we should manage the resources when they are in abundant supply. And you know the popular saying, make hay while the sun shines. So when things are going well, take care of them that time. Take care of them that time. Don't wait for bad time to come. చూడండి ఇంతే చూడండి పడుకున్నా నీ హెల్త్ బాగుంటాయి, నీ టీత్ బాగుంటాయి, టీత్ రెస్ట్ దొరుకుతుంది, మాట్లాడుతున్నప్పుడు టీత్ రెస్ట్ దొరుకుతుంది. Sir, I think moderator can mute Mr. Anthony Pratap. I think where is your Mahek? Mahek, please mute everyone. నువ్వు ఎక్కడ పడుకుంటావు అక్కడ పడుకోవు లేకపోతే నేను ఇంత చెల్లి నీ దగ్గర అంత మరి I am not able to mute actually. Only Mehak can do it. Mahek, sir. You can advise Mahek. Making call to Mehak ji ma'am, sir. Huh? I am calling her, sir. Okay. हाँ महक जी को बोल दिया है सर, अभी वो कॉल कर रही हैं एंथनी जी को. Okay. Thank you so much. Thank you. Okay. Really sorry for this disturbance. That's the advantage and disadvantage of being online. No worries. So as the saying goes, make hay while the sun shines. So when things are in favor of you, please ensure to take maximum advantage of favorable things. Okay. Can you tell me till now in your life, what is the most valuable gift you have got from anybody, any kind? Most valuable gift you have got till now? Our life, sir. Our life. Okay. Wonderful. That's no doubt. Life and time, sir. Time. Health. Life and time. Somebody said time. Wonderful. Yes. Health, sir. Health. My education, sir. Yeah, education, health, life, and time. Beautiful. The most important resource is time. Do you know why this time is most important resource in our life? Apart from health, life. क्योंकि एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता था. Wonderful. एक बार चला गया तो दोबारा नहीं आता. Yes, sir. Like manpower resources, अगर आपके पास कम है तो you can hire
so number of people 10 हैं, आपके पास 15 चाहिए, 5 you can hire. Money आपके पास कम है, you can have extra job or extra earning. You can do some business or whatever, so you can increase your income through maybe promotions or increments and all that. But time is one resource which is constant. It is free, but it is priceless. You see the situation. Time, it does not cost any money, right? But it's priceless. No money can buy time. No money can buy time. You can't keep it, but you can spend it. Another issue. आप इसको रख नहीं सकते, तिजोरी में रख नहीं सकते, but you only can spend it, So why I am putting this thing is, number one, time is free but priceless. So imagine, remember in life, no money can buy time. No money. जितना ही पैसा अनिल अंबानी चाहे, मुकेश अंबानी चाहे, they want to buy time, even a second they cannot buy, right? You can't keep it, but you can spend it. So focus on spending. You can spend it. And the last one is, once you have lost it, you never get it back. So that's very simple. You will never get it back, which you have lost it. And I believe the past should not bother you. So once you have lost it, fine enough. I mean, it is gone. So if you worry about the lost time, you will be wasting more time. You'll be wasting more time. So जो गया सो गया, उसको आप भूल जाएं. Now what? Because this is the moment. This is the moment of your life. Okay. Can you increase time? Can you increase time? Can you? Anyone? Yes, no? Can you increase time? No. No, only we can manage time. Somebody in the previous lecture said we can't manage time. We can manage, sir. Effective utilization of time only. No, I think somebody said very relevant comment that, sir, we can, ma'am, we cannot manage time, but we can manage work. Excellent. So that's wonderful. That's wonderful. Yes. Can you increase time? Yes, no. Straight away. Just by taking others' time. Huh? By taking others' time. Nobody can take somebody else's time and add into my time. I can't. This is not possible. So No, my time, not my time, but you can utilize that others' time. काश ये हमारे पास होता है ऐसा. I know what you are trying to say, but Yes. the question here is, can we increase time? So My time I cannot increase because it's a limited 24 hours per day. But I Right. can increase time for a work or by hiring someone by like you can say Mukesh Ambani. आपने कहा कि बढ़ा नहीं सकते time, but उन्होंने purchase किया हुआ time 50,000 employees का, and he is utilizing that time. Okay. Very well said. Okay. Time is money, sir. Huh? Time is money. Somewhere I read. Time is money. Yeah. We will come to that also. Okay. ये जिन्होंने अभी कहा कि मुकेश अंबानी ने 50,000 लोगों को खरीद रखा है, उनका टाइम ले रखा है. See, that we are not talking about other people's time. What we are talking about is our own time. Like if you are there, Rakesh, Beenaji, or Santosh, or whosoever, or myself, so we have these 24 hours. Now my question is, can I increase 24 hours? It's not that I hire 10 people, so I have 140 hours. No. My time. We are talking about our time. Can we increase those 24 hours? As such, it can be increased. Can't be increased, right? As such, it cannot be increased, right? Okay, let's see. Now, if I say my day has 27 hours, I think it's not relevant, right? It's not relevant because my day only has 24 hours, and
You all know that time is a constant thing. Everybody gets equal time. 24 hours, 24 hours. Okay, let's see. I like the person who said that we cannot manage time and we can manage the work. And similarly, uh, managing time may be difficult, but investing in time wisely can give you big returns. If you invest in time wisely, it can give you big returns. Okay. As somebody has already said, so I don't need to ask that do you believe that time is money? So some person has already said, and I'm sure you all must be believing that time is money. If somebody doesn't believe, he can show me like this. So you believe time is money. Now my question is, do we waste money knowingly? Not unknowingly. Do we waste money knowingly? Yes. Yes, we do. Anybody? Yes, sir. Everybody wastes money? Yes, sir. Everybody wastes money. But you have told knowingly we don't waste. Yeah, see, that is what my question is. Not unknowingly. See, wasting money like आप कहीं गए, आपने कुछ खरीद लिया, आप घर पे आए, आपको अच्छा नहीं लगा. So it is unknown waste. Knowingly, I know ये 100 रुपीज़ मैं दे रहा हूँ, ये मैं वेस्ट कर रहा हूँ. ऐसा करते हैं आप कभी? Yes sir, sometime we do. जैसे सपोज मैं लेडीज का एग्जांपल दे रही हूँ सर. हमारे पास बहुत सारी ड्रेसेस हैं, स्टिल हमें पता है कि ड्रेसेस अभी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हम एक नई ड्रेस और ले लेते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके वेरी आप वैसे बहुत यू आर बीइंग टू ऑनेस्ट लेकिन अगर आप देखें तो हम पैसा अगर हमें को पता है क्या होता है कई बार. अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ. व्हेन यू बाय ड्रेस, जैसे आपने ड्रेस की बात की, सपोज यू बाय अ ड्रेस फॉर यू, सो व्हाट डू यू बाय? सर मार्केट में जो भी पसंद आता है, अगर मुझे घर से तो ऐसे लगता है कि अभी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मार्केट में जाते हैं कुछ देखा, अच्छा कुछ लगा, भी ऐसे चीज है और अच्छा लगा तो वो ले लिया. करेक्ट. तो आपको अच्छा लगा. सो कहने का मतलब बाय आवर हैप्पीनेस, हमको लगता है कि वो आएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे या सेटिस्फाई हो जाएंगे. व्हाट आई थिंक कि हम हैप्पीनेस बाय करते. दूसरा मैडम ने जो कहा कि नोइंगली हम वेस्ट करते हैं, नोइंगली नहीं करते, अननोइंगली करते हैं. क्योंकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो आपने ड्रेस खरीदी है क्या आपने वेस्टेज किया मनी का, तो आप कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि मैंने वेस्ट किया. और बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप. और मैं आपसे मैडम से ये भी जानना चाहूँगा कि जैसे अगर उन्होंने क्योंकि माई वाइफ ऑल्सो शी एवरी टाइम ओनली वन प्रॉब्लम शी हैज़ दैट शी डजंट हैव एनी क्लॉथ एनी टाइम. समर आएगा तो समर के कपड़े नहीं है, विंटर आएगा तो विंटर के कपड़े नहीं है. लेकिन क्या होता है व्हेन शी बाइज एंड शी वियर्स वंस, सो तो पैसा वसूल. इट इज़ लाइक दैट. सो अगर आपने ड्रेस खरीदी और एक बार पहन ली, सो दैट्स वन. अच्छा, मैं क्या कह रहा था, जैसा इन्होंने बोला, आई डोंट नो हिज नेम बट सर कैन यू टेल मी योर नेम? धीरेन. यस. जैसे धीरेन जी ने कहा कि वी डोंट बाय क्लॉथ बट वी बाय हैप्पीनेस. सो जो हमें खरीदने से जो खुशी मिलती है उसके हम पैसे दे रहे हैं. हम जो चीज़ खरीदी है उसके पैसे नहीं देते, हमें खुशी के. जैसे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा, बच्चे दे बाय सो मनी थिंग्स विच आर नॉट रिक्वायर्ड. माई सन, ही वॉज व्हेन 3-4 years, he wants to have car whenever he goes out. Whenever I go on tour, he has to have car, and he has 100 cars already in the house. So I am not buying car for him, I am buying happiness for him. So when he sees that car, the smile that comes on his face, that is what I am buying for him. And madam, sir, आप हमेशा याद रखिए, जब भी हम ड्रेस खरीदते हैं, whenever I buy a shirt, I don't buy a shirt. We never buy a shirt. We buy the स्मार्टनेस, वी बाय द ब्यूटी, राइट? कि हम इस शर्ट को पहन के वी विल लुक बेटर, सो बेटरमेंट वी आर बाइंग द ब्यूटी, राइट? सो दिस कपड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, द वैल्यू इज फॉर द ब्यूटी एंड द इमोशंस. सो 90%, okay, I can say that 90% of people
will not waste money knowingly. But that does not happen with time, right? That does not happen with, we know, हमें पता है, कि हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर फिर भी हम करते हैं, right? Okay, now suppose your salary is 100. So when your salary is 100, so you know that you have fixed expenses, you have variable expenses, and part of it is saving. So suppose if 50 is the fixed expense all your house rent, बच्चे का fees, and जो भी आपके fixed होते हैं, and then variable expenses are all your shopping. जैसे आपने बोला आपको ड्रेस पसंद आ गई, बाहर खाने चले गए, दोस्तों के साथ बियर पीने चले गए रेस्टोरेंट में, and all that stuff. So that is the variable expenses. And then what is left is saving, that is 20 rupees is left for saving. Now, without increasing the salary, suppose your salary has not increased, it is 100. Can you increase saving from 20 to 30? You can? Can yes, you? By decreasing the expenses. Wonderful. So no need to spend more time here. Wonderful. So if you reduce the variable expenses, see, remember, always you will cut on the variable expenses, not on the fixed expenses. Okay. Right? So you can increase. Now, so when you reduce the variable income, that goes mostly into the saving. Now, this is 27 hours. Some people have 27 hours. And how do we have that 27 hours? Very simple. You have 24 hours. Fixed time is 12 hours. Suppose, just for assumption. What is the fixed time? Can somebody tell me what are the fixed time? Sleeping time. खाने का, सोने का, खाने का, सोने का. Sleeping time, sir. Yeah. Family time. Yeah. The most important fixed time is the sleeping time. Most important. Rest follows. खाना खाना है, आपको अपना some कुछ अपना recreation कुछ fix है आपका, something that. But most importantly, your fixed time is the sleeping time. Never cut on your fixed time. Never cut on your sleep. Never cut on your sleep. Come what may, कुछ भी हो जाए, आपको अपना sleep नहीं खोना है. I was, I had a lot of pressures, deadlines. I was in Nestle, as you know, I have already disclosed to you. I spent 25 years in Nestle. A lot of, presentations. Next day, the boss is coming, big boss is coming, and we have to make presentation. And रात भर, आँखों में नींद कर रहे हैं, all that. So that kind of thing. That did not help. What happened? Once I was trying to complete a task which I had to present the next day morning, and my eyes were not opening, like usually happens after lunch, but my eyes were not opening. So my wife comes to me and she says, "You go and sleep." Come on, next day such an important presentation. अगर ये presentation नहीं बनी, so I can, it can hamper my job and all that. She said, "Don't worry, you go and sleep. It's my responsibility. I'll wake you up at 4 o'clock." You won't believe, my eyes were not opening and I went to sleep. When I went to sleep, she woke me at 4 o'clock. Fresh. Absolutely. Believe me. And 4 to 6 I worked on that presentation. जितना मैंने 2 घंटे में वो प्रेजेंटेशन बढ़िया बनाया, शायद मैं रात के 4 घंटे में नहीं बना सकता था. Because I was in sleep, my mind was working half. फोकस नहीं था, कुछ नहीं था. अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं जाग के करता तब भी करता, लेकिन what I did the next day morning was class apart. So believe me, if you do not cut on your fixed time, that's one boon you can get, that next day जो आप काम करेंगे उसका आपका concentration, उसका focus इतना ज़्यादा होगा कि आप 4 घंटे का काम 3 घंटे में कर देंगे. Provided you had a wonderful night's sleep. So don't cut on this, but you have the variable time, right? So variable time को अगर आप reduce करेंगे,
You can have 25 hours, you can have 26 hours, or you can have 27 hours in your day, right? So the needle of investing in time stops at variable time, right? Okay, let's see. Very small exercise. Total money in your purse, you have to write down on your, without seeing your purse or the wallet. You don't have to see your wallet or the purse. Please write down, just imagine or think how much money you have in your wallet or purse, right? So you may discard the coins, at least notes, how many value money do you have. Second is the number of 100 rupees notes, how many 100 rupees notes do you have. Third is the number of cards. Cards is the all the plastic card, not the visiting card. The plastic cards, you know, the credit card or the Taj Inner Circle card or any other card if you have. Number of cards you have, and your spouse mobile number. Write down your spouse mobile number, and please give 10 marks for each right answer. Once you have done it, please check it. If it is true, if it is correct, please give 10 marks, and please tell me your total score. Your total score. You have to check, you can cross check whether your total money is right, number of 100 rupees note is right, number of cards is right, or your spouse mobile number is right. So if it is right, give 10 marks to each answer, and please let me know how many marks did you score. Say again the question, sir. Pardon? 20 marks, sir. 20 marks only. Say again the question, sir. Question is written here, if you can see it. Total money in your wallet, number of 100 rupees notes, and number of cards, and your spouse mobile number. These 4 questions. 20. You got 20. Yes. Same, right, 20. What's your name, sir? Sir, 20 marks. What's your name? Santosh Kumar Sinha. Santosh. Okay, no, with a cap, man with a cap. Yeah. 20. What's your name, sir? Dhanji. DHANGEE. Dhanji. अच्छा, Dhanji. Okay. Dhanji, 20 marks कहाँ खोए आपने? Sir, first two I didn't remember. Only last के 2 number याद है. Number of cards and the spouse number. Okay, wonderful. Anybody who got less than 40? Just a minute, sir. What? Yeah. No, 40, sir. Wonderful. Clap for yourself, sir. Clap for yourself. Thank you, sir. 30, sir. बीना जी बहुत मेहनत कर रही हैं, क्या बात है? I didn't get your. Suppose I have 3,500 in my purse. हाँ. And 500 notes. No, only 100 rupees. 500 notes. Rest are 500 notes. Okay, no problem. No, whatever. So if you have 100 rupees note, then it is 0. No, I have 5, sir. You have 5. So you have written 5? Yes, sir. Okay. So if you give 10 marks to each, how many marks you got? Okay, sir. 40. 40. Wonderful. Okay, no worries. So the people who have got 40 marks, that means that they are closer to organizational skills. I mean, they have much better organizational skills. Now, people who have not got 40 marks, who has got 20 marks or 30 marks, not to worry. You are just step away from the being organization handling the organization skills. Now that organizational skill is so very important to save time, right? अगर आपको 24 से 27 घंटे करने हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में अपने ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में ज़रा भी ढील नहीं देनी है. नाउ लेट्स सी. I'm sure it's very clear. This is a Mumbai traffic. Real picture of Mumbai traffic. How many of you would like to be in this traffic? Yes, no. Yes, no. No. Wonderful.
none of us would like to be in this traffic. Now you see, you will change your answer. Can I change your answer? Can I change your answer? Yes, no. Yes, sir. I can. Oh, wonderful. Thank you so much. Now this is the another scene. This is some place in south, I don't know. But this is a total chaos. Now, if given an option, would you like to be in this traffic or in this traffic? फर्स्ट वन सर, First one, sir. First one. See, अब ये 2 मिनट पहले आप सब लोगों ने कहा था कि you don't want to be in this traffic, and now you say that I choose to be in this traffic. Why you choose to be in traffic is because it is organized. Wonderful, sir. Thank you so much. Now that is the beauty of organization. That is the beauty if you have the organization skills developed in you, right? You can win over any situation if your organization skills are up to the mark. Now, beauty of this is that at least it is organized and people will move slowly, lekin they will move. But यहाँ पे it's not possible. You don't know how much time will it take. Now, मैंने आपको बोल तो दिया organization and this. How will you check whether you are deviating from organization skills or you are on track? How will you एक तो ये छोटा सा एक्सरसाइज था, that's okay, that's one. But रूटीन में, रोज़मर्रा की लाइफ में आप कैसे पता लगाएंगे कि आप ऑर्गेनाइज्ड वे में चल रहे हैं या डिविएट कर रहे हैं? कैन समबडी टेल मी हाउ डू यू चेक वेदर यू आर? सर अगर मुझे लगता है कि मैं जितने काम करना, हमेशा ही मेरे पास काम पेंडिंग बने रहते हैं, है ना, मतलब मेरी टेबल्स पे फाइल पड़ी रहती हैं, मैं कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो शायद मैं ऑर्गेनाइज्ड नहीं हूँ। शायद नहीं, पक्का बताओ। 100% ऑर्गेनाइज नहीं हूँ, क्योंकि अगर पेंडिंग चीजें पड़ी हुई हैं, मतलब टाइम मैनेजमेंट मैंने नहीं किया सही से, और जो जहाँ पे नो कहना चाहिए था शायद मैंने हाँ कह दिया। उस दिन भी शायद बात हुई थी कि एक मैडम कोई बता रही थी कि बहुत सारी टेबल उनकी पड़ी हुई थी, तो ऑर्गेनाइज नहीं हूँ मैं, इसलिए मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग रहते हैं। और बहुत सारी जगहों पे मैं ऐसा लगता है कि और टाइम होना चाहिए था, है ना, 24 आवर्स नहीं 48 आवर्स होते तो भी शायद, लेकिन मैं तब भी नहीं कर पाता बिकॉज आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड। ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। ओके, हाउ अदर्स चेक whether they are organized or not? One is excessive work, which is pending work, we can say pending work. Others, how do you check whether you are organized or not? Sir, I think absence of planning, sir. Absence of planning. प्लानिंग, मैं आपको प्लानिंग पे ना एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाऊंगा आपको। अभी आप सब भूल जाएंगे प्लानिंग क्या होता है, मतलब प्लानिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। I'll just come to that. But criticized by someone. Suppose, sir, we are getting criticism from someone. आपने मेरा लेक्चर आपने सेशन सुना होगा कल का, क्रिटिसिज्म is important, sir. क्रिटिसिज्म इज, वही तो बंदे हमें इम्प्रूव करते हैं, you know, they make us better. So no worries, if you are getting criticism, it's good for you, it's really good for you. People आजकल मियाँ मिट्ठू बोलते नहीं, वो क्या बोलते हैं मुंह पे, मुंह मियाँ मिट्ठू ना, मुंह देख के मीठी बातें करते हैं। मतलब आजकल लोग सामने अगर आपका फेस देख लिया, you know, when they are face to face, they'll talk all good about you and you will never improve. You will like those people, you will like the feeling, हाँ मेरे लिए अच्छा बोल रहा है। कौन किसको तारीफ अच्छी नहीं लगती, सबको अच्छी लगती है, लेकिन you will only get a feeling of being better, you will never improve. You will improve only with critics, जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे उन्हीं से आप इम्प्रूव करेंगे। तो कल मैंने ये भी कहा था परसों कि प्लीज़ कल्चर क्रिटिकल पीपल अलॉन्ग, यू नो, आसपास, अपने आसपास ऐसा बढ़ावा दीजिए कि लोग आपको क्रिटिसाइज करें, उसको बढ़ावा दीजिए। मतलब क्या है, अगर आपके बारे में कोई गलत बोलता है उसको आप एकदम ना मत करिए, यू नो, एकदम से उसको डिफेंड मत करिए,
या उसको ऑफेंड मत करिए, लेट हिम स्पीक, तभी लोग आपसे बोलेंगे। आपके बारे में अगर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट देनी है मैं तभी दूंगा जब मेरे को ट्रस्ट है कि ही विल लिसन टू मी विदाउट एनी रिएक्शंस, देन ओनली आई विल गिव यू। सो आप ऐसा अपना बिहेवियर बनाइए कि क्रिटिक्स आपके साथ हों। ओके सर, और दूसरा ये है सर कि कई बार ना वाइफ बोलती है कि तुम बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं हो, क्योंकि कपड़े यहाँ पड़े हैं, Right. जूते वहाँ पड़े हैं। ये और यस, तो कई बार हम ऑर्गेनाइज है। सिमिलरली ऑफिस में भी ऐसे ही होता है, कुछ चीजें यहाँ पड़ी हैं, कप यहाँ रखा है। कई बार Correct. ऑफिस में बॉस बोल देते हैं कि यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। तो एब्सोल्युटली, इन सब चीजों से हमें लग जाता है अंदाजा कि हम लोग ऑर्गेनाइज शायद नहीं है। शायद नहीं, 100% नहीं है। डोंट हैव डाउट, डोंट हैव Yes, डाउट, yes. या Yes, इट्स yes, yes. एब्सोल्युटली राइट। सी, जैसा आपने बताया ना कि घर पे कपड़े यहाँ पड़े रहते हैं, मैं आपको एक आई विल गिव यू जस्ट वन सेंटेंस जो आप अपने आप से बोलते हैं। कुछ भी आप काम करते हैं ना, जैसे मान लो मेरे को मैंने स्क्रू ड्राइवर निकाला, मेरे को एक पेज खोलना है किसी का, मैंने स्क्रू ड्राइवर निकाला, मैंने पेज खोला, काम किया, पेज बंद किया, और स्क्रू ड्राइवर को मैंने टेबल पे छोड़ दिया। द मोमेंट आई टेल माई सेल्फ कि अभी रखता हूं, मतलब उसकी जगह तो अलमारी में है, मैंने उसको टेबल पे रख दिया, क्योंकि मैं अपने आप को बोलता हूं कि अभी रख देता हूं। आई डोंट टेल एनीबडी, किसी से बात नहीं हो रही मेरी, सिर्फ मैं अपने आप से बोलता हूं कि अभी रखता हूं। जहां पे अगर आप ये सवाल अपने आप से, ये लाइन अपने आप को बोल रहे हैं ना, इसका मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन से दूर जा रहे हैं, राइट? सो नेवर टेल योर सेल्फ कि मैं अभी रखता हूं। गो एंड कीप इट, गो एंड कीप इट। ऐसे ही आपका है सर, जो आपके कपड़े पड़े रहते हैं, जो आपकी फाइलें पड़ी रहती हैं, नेवर टेल योर सेल्फ कि अभी रख देंगे। या होता है ना, एक कानपुरिया एक माहौल होता है, अरे चलिए लखनऊ ही जाइएगा ना, मतलब बहुत स्लो में चलते हैं वो, तो कर देंगे, ऑल दैट स्टफ। सो दैट हैज़ टू बी स्टॉप। तो अगर आप अपने आप से ये बोल रहे हैं कि आई विल जस्ट डू इट, दैट मीन्स यू आर गोइंग अवे फ्रॉम बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ओके, अच्छा, प्लानिंग की आप बात कर रही थी। आई थिंक बीना जी वॉज टॉकिंग अबाउट प्लानिंग। सी, प्लानिंग मैं आपको दिखाता हूँ। प्लानिंग का ये है कि मैं ये नहीं कहता कि आप प्लान मत करो, मैं आई विल नेवर से दैट, यू मस्ट प्लान इट, यू मस्ट प्लान इट, मतलब दैट्स अपना आवर ओन, बिकॉज दिस लाइफ इज आवर्स। सो आई विल नॉट टेक, जैसा मैंने फर्स्ट सेशन में कहा था कि जब तक मैं आपको कुछ बेटर नहीं दूंगा, आई विल गिव यू समथिंग बेटर, देन ओनली यू विल एक्सेप्ट द चेंज, अदरवाइज यू विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज, राइट? सो आई हैव टू गिव यू समथिंग बेटर। सो इफ़ यू आर प्लानिंग एंड इफ़ यू फील द प्लानिंग इज गुड, प्लीज़ गो अहेड। मैंने भी ये प्रेजेंटेशन रात को प्लान किया था, राइट? एंड आई ऑलवेज मेक द प्लान नहीं, मेक द प्रेजेंट। मैंने प्रेजेंटेशन बनाया था और मैंने कहा कि आई विल स्पीक दिस, मैंने प्लान किया। और गलती से मैंने संगमित्रा, आई थिंक द प्रीवियस speaker was Sangamitra. She was talking on the goal setting, right? Yes, sir. Yes. मैंने उनका सेशन सुन लिया, और उनका सेशन जब मैंने सुना तो मैं वापस अपने मेल में गया, मैंने अब चेक किया कि व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन। तो देन आई चेक्ड इट, ओ माय गॉड, इट इज़ मैनेजिंग टाइम, रिसोर्स एंड प्रायोरिटीज, एंड शी वॉज स्पीकिंग ऑन टाइम, रिसोर्स एंड प्रायोरिटीज। आई मीन शी वॉज स्पीकिंग लॉट ऑफ, काफ़ी उन्होंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपसे बात की। माय डियर फ्रेंड, मेरा सारा प्रेजेंटेशन डिस्टॉर्ट हो गया, बिकॉज आई कांट स्पीक द सेम थिंग व्हाट शी स्पोक टू यू, अदरवाइज आई विल बी, आप मेरे को कहेंगे क्या ये, तो आई नो ABCD, ही इज़ टेलिंग मी ABCD, सो यू विल नॉट लिसन टू मी, एंड लंच के बाद वैसे ही आप आंख बंद करके सो जाएंगे। सो माई प्लानिंग हैज़ गॉन। प्लान किया था कि ये प्रेजेंट करेंगे, बट दैट हैज़ गॉन, एंड इमीडिएटली इन नेक्स्ट हाफ एन आवर आई हैड टू मेक चेंजेस, लॉट ऑफ चेंजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं 100% चेंज कर पाया हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारे चेंजेस किए और वो चीज़ हटाई जो उन्होंने बोली आपको, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, सो आई वांट टू गिव यू समथिंग बेटर, सो उन्होंने अगर स्टीफन कवॉय का मैट्रिक्स आपको बताया है, तो मैं वो चीज़ नहीं बताऊंगा जो उन्होंने बताई हैं, मैं वो चीज़ बताऊंगा जो उन्होंने नहीं बताई, या मेरी चीज़ें आपको अलग होंगी, देन ओनली इट इज़
a value for time. Otherwise, it is no meaning. So that is number one, planning का. Man proposes, God disposes. हम प्लान करते हैं, God उसको dispose कर देता है. अगर मैंने शायद नहीं सुना होता तो कुछ चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती, आप कहते यार ये तो अभी तो मैडम तो बता के गई हैं, ये क्या बता रहे हैं, you know, something like that. So that is one. Number two, how many of you play cricket? Do you play cricket? Yes, he plays. Okay. Does not matter. Even if you don't play cricket, do you watch cricket? Do you watch cricket match? No? Almost all Indians. All Yes, Indians sir. know. Yes. Like my father, he used to, he never, I शायद उन्होंने कभी बैट भी हाथ में नहीं उठाया होगा और बॉल भी शायद नहीं पकड़ी होगी हाथ में. But he used to watch cricket. He used to watch cricket matches. यार बहुत उनको मज़ा आता था, you know. टेस्ट मैचेस होते थे उन दिनों, और 5 दिन के टेस्ट मैचेस, लास्ट डे का इंतज़ार करते थे, you know, all that stuff. वो कहते थे, if he is into the problem or if he is into, you know, to act, तो I used to tell him कि आप क्या करने वाले हैं. I used to ask him क्या डैडी आप क्या करने वाले हैं. तो कहते तू क्रिकेट देखता है. मैंने कहा हाँ. एंड आई प्ले ऑल्सो, मतलब आई यूज़ टू प्ले. अभी भी थोड़े टाइम पहले तक मैंने क्रिकेट खेला है, कॉर्पोरेट मैचेस एंड अदर स्टफ. Played in Green Park, Kanpur Stadium also. So he used to tell me कि बॉल आने से पहले मैं तुझे शॉट की कैसे बता दूं मैं कौन सी शॉट मारूंगा. जब बॉल आएगी तभी तो बनाऊंगा ना कि मैं उसको हुक करूंगा कि स्क्वायर किट करूंगा कि यू नो पुल करूंगा. सो हाउ कैन आई टेल यू बिफोर द बॉल कम्स, यू नो. सो यू नो इस चीज़ों को देख के लगता है कि how can I plan something? Now I plan to go to Jaipur from Delhi. So can I plan my journey all throughout? Very very difficult, you know, very difficult. Yes, I can guesstimate कर सकता हूँ कि ठीक है 5 घंटे जाएंगे, 5 घंटे हम you know में ट्रैवल कर लेंगे और रास्ते में हम मिडवे पे रुक जाएंगे, मिडवे पे शिवा ओएसिस पे रुक लेंगे. These kind of things we plan. When we go, we find Shiva Oasis is closed, no problem. Then we find 5 hours की जगह हमें 6 घंटा लग गया, ट्रैफिक जाम मिल गया एंड ऑल दैट स्टफ. सो प्लानिंग गोज हेवाय. अच्छा, तीसरा, नंबर 3, जो लोग प्लानिंग की बात करते हैं, नाउ डू यू ऑलवेज हैव वन प्लान और डू यू हैव प्लान ए एंड प्लान बी? डू यू बिलीव इन प्लान ए, प्लान बी? सर. Yeah? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Do you all believe in plan A, plan B? Depends on the situation, sir. So normally, I mean, not very specific, but usually, do we have 2 plans? Normally, a single plan we have. All of you? You don't believe in plan B? All the defense people, all the big organizations, they believe in plan B. You don't have plan B? Huh? No? Okay. Wonderful. Wonderful. So this is the third thing. So I don't believe in plan B. I never believed in plan B. या तो मैं प्लान नहीं करता हूँ, लेकिन अगर प्लान करता हूँ तो ओनली वन प्लान. Now if I have plan B, that means I don't believe in my one planning, the first planning. I don't believe. And if I have something to bank upon, that is plan B, I will not give my 100% in this. I will not give 100% on this. Right? So it is, if you don't plan, no problem. But if you plan, then have only one plan. Okay. Now, please mute your mic, somebody. Okay, Stephen Covey, Sangamitra madam has already talked about this, and she has shown these 4 quadrants, right? You all know one quadrant, first quadrant is the task, is the incidents, is the work, which has somebody's mic is on.
Okay. So, high important and high urgent, high urgency, high important. This is quadrant 1. Now, please tell me which are those tasks. आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशन में अगर ऐसे कोई टास्क आए हैं तो कौन से वो टास्क हैं विच विल फॉल इन दिस क्वाड्रेंट. अगर नहीं आए हैं तो व्हाट काइंड ऑफ टास्क विल फॉल इन दिस क्वाड्रेंट. हाई इंपॉर्टेंट, हाई अर्जेंसी. जैसे मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बुखार है, तो मैं अर्जेंट और इम्पोर्टेंट भी है मेरे लिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल. राइट. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स जहाँ पे हमें कुछ और नज़र नहीं आता है, सिर्फ वही चीज़ हमें करना है क्योंकि हमारे किसी लव्ड वन की ही रिक्वायर्ड मेडिकल इमरजेंसी, सो ही हैज़ टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल. रेस्ट आई विल नॉट केयर. बिल्डिंग में आग लग गई है, राइट, देयर इज़ अ फायर इन द बिल्डिंग, वी कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स, हमें वो फायर बुझानी है. सो द टास्क which requires medical emergency, like जैसे सर ने बताया, and any crisis which happens, any crisis, चाहे वो natural crisis हो या building में आग लग गई हो या कुछ भी हो, that falls under high important and high urgency. तो ये जो काम अगर हमारी लाइफ में पीछे अगर आपकी लाइफ में आए हैं तो आपने किए होंगे, और आइंदा से अगर कोई इस क्वाड्रेंट में आता है काम तो वो आपको इमीडिएटली करना होगा. मतलब क्या है? द एक्शन ऑफ दिस इज डू इट राइट अवे. देयर इज नो सेकंड ऑप्शन. यहाँ पे हमारे पास नो प्लान ए, नो प्लान बी, नो सेकंड ऑप्शन, नथिंग इज अवेलेबल टू अस. दीज काइंड ऑफ टास्क वी हैव टू डू इट immediately. Okay. Now next comes is importance is high, but urgency is low. Now, can you tell me the task which has high importance and low urgency? Any task. Which are those tasks which are high importance and low urgency? Yes, please. Sir, to take water in the morning. Very good. Very good. That's a good example. Importance is high, urgency nahi hai. Like when you are drinking water, you are not thirsty, so urgency nahi hai, but importance hai uska. Importance hai. Very good. Any other examples? Most important. Now see, this is the only quadrant. स्टीफन कोवाई ने 4 क्वाड्रेंट बनाए हैं, लेकिन यही क्वाड्रेंट है. इफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वाड्रेंट, योर लाइफ विल बी मच बेटर. If there is any misunderstanding of this quadrant, you will struggle for your time. What are other tasks? Give me some more examples. कोई भी मेरा प्रोजेक्ट है सर, जैसे अभी मुझे कोई चीज प्रोक्योरमेंट करनी है, राइट, सपोज जैसे अभी मैं सीसीटीवी प्रोक्योरमेंट कर रहा हूँ, तो वो इम्पोर्टेंट है एयरपोर्ट के लिए, बट इट्स नॉट अर्जेंट कि आज ही खरीदना है, बिकॉज कि वो ऑलरेडी मेरा सीसीटीवी सिस्टम चल रहा है, राइट, एंड सो इट इज इम्पोर्टेंट कि रिप्लेस करना है बिकॉज लाइफ इज गोइंग टू एक्सपायर, बट इट्स नॉट अर्जेंट. राइट. धीरेन्द्र जी, मैं ये कहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ की जी, तो वो हम अपने एंगल से बात करते हैं. लाइक मे बी समथिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स फाइन, बट ये क्या मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, दैट इज वॉट आई मस्ट सी ऑलवेज, राइट. तो कई चीज़ें होंगी मतलब जो दूसरों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी, बट क्या वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, that is more important. So if it is important for you as well, then it will fall in this yes, because as a professional career it is my project, yeah, so it is given to me, yeah, so it is important for me. Okay,
Okay. See, anything in the organization, if anything is given to you, it is important. So Yes. that becomes important because that's my job. That is how I earn my increments and the promotions and all that stuff. But make sure that it is really has high importance. High importance. There's a difference. एक चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और एक चीज़ मेरे हाईली इम्पॉर्टेंट है. सो आई वॉन्ट टू फोकस हेयर ऑन द हाईली इम्पॉर्टेंट टास्क. हाईली इंपॉर्टेंट टास्क. सपोज आपको सीसीटीवी कैमराज खरीदना है. नाउ देर इज वन लाइन विच हैज़ गो टू चेयरमैन फ्रॉम यू. नाउ दैट बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट, राइट. तो आप बोलोगे यार सीसीटीवी 2 दिन वेट कर ले, नो प्रॉब्लम, बट ये लाइन जो उनको जानी है, दिस कैनॉट वेट. सो दिस इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट आई एम गिविंग दी. I want to understand, I want you to understand that what is high in importance. Important तो हैं, there are most of the tasks which are important. हमें 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, that is also important, but is it a high importance? So I want you to focus, I want you to think which are those tasks in your life, professional as well as personal, in both, including both. Which are those tasks which are highly important? Acha, take for example your personal life. What is the highest important thing in your life? My health. Wonderful. What else do you need? Exactly. So your health is the most important. So your health, managing your health is here. Managing your health is here. That means high importance, but urgency nahi hai. Like you are sitting here, you walk, so you may not focus right away on the do it. जैसे है ना, high importance, high urgency, वो urgency नहीं है. लेकिन आप देखिए दोनों urgent हैं, लेकिन आग लगी है तो वो highly urgent है. हेल्थ बनाना है तो urgent नहीं है. If I have to, मतलब I can, suppose मैं exercise करता हूँ, आज मैंने दिन में नहीं की, मैं शाम को कर सकता हूँ. शाम को मिस, एक दिन मिस हो गया, मैं अगले दिन कर सकता हूँ. So that kind of, because I have time. But my health is the most important. You agree? Your health is the most important thing, even after this corona. So as you really very well said, that your health is the most important thing in your life. Highly important, but it is not urgent, right? So all your exercises, all your regime for maintaining your health is important, right? Okay. Now, if I do not focus on my highly important task when I have time available, now time will keep running, right? Time will keep running. Now, if time exhausts and my highly important tasks are not done, then it will go to this first quarter. High importance, high urgency. That means when time is there, you link to the first statement. When resources are available in abundantly, if I don't focus on them, they will become less, right? Same way, if I don't focus on my health when I am healthy, there are all probabilities that I may get an heart attack, I may get something else, and it will go to the high important and high urgency, and it can lead to crisis, and that I have to go to hospital immediately and take leave from the office and all that stuff, right? So it is so very important to understand in your life, in your professional life, also in your personal life, that which are those highly important tasks, but which are not urgent, which are not so urgent. Very important. Focus on this quadrant. So what you'll do, you focus well, right? These tasks you must focus well. Okay. Now there's a third quadrant, which is importance is low, but urgency is high. Now, can you name some of these tasks? Any of these tasks? Importance is low, but urgency is high. What kind of task comes here?
urgency is high, it has to be done. Urgency is high, but importance is low. Sir, for example, we are working in aviation sector. Yeah. And at times, it's not only applicable to aviation only, to many wings. Like there is one thing called RTI, right to information. Right. So the thing is, because of the stringent rules applicable to RTI Act, so the urgency to reply is very high. Right. But the fact or the information sought may not be that much important. Correct. Absolutely. Now, suppose you are handling a RTI, right? And you know that it is highly urgent. I need to send it because there is a deadline. But since it is not so important, so can you tell somebody else to reply for you? Can this be replied by somebody else? Yes, no? No, it is to be replied by the person himself, to whom, whoever is the custodian. Yeah, whatever. So from your mail only, whatever from your mail ID. Now, but can you delegate this to your subordinate? कि मेरे मेल से लाइक आई कीप वॉचिंग माई वाइफ. सो उनका बॉस का कुछ ई ऑफिस चलता है उनका. सो उनके पास कुछ अप्रूवल के लिए आता है. सो व्हाट इज सेज, क्या अप्रूवल के लिए आया है? अच्छा ये आया, अच्छा ये मेरा पासवर्ड है, ये मेरा OTP है, लॉग इन पासवर्ड ये है, प्लीज़ अप्रूव दिस. ही डज दैट. डू यू नो व्हाट इज दिस? Now this is called delegation. सर जैसे अभी आज ही मैंने फेस किया, बिकॉज आई एम IT इंचार्ज ऑल्सो. सो एक ऑफिसर थे, उन्होंने बोला मेरा प्रिंटर खराब है, तुरंत रिप्लेस करो, इमीडिएटली रिप्लेस करो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा वैसा उन्होंने कहा. तो आई नो कि दिस इज वेरी अर्जेंट फॉर इट. और तो फिर मैंने क्या किया, आई हैव सेंट IT इंजीनियर्स. मैंने उसको इंजीनियर्स को भेज दिया कि यार जाओ, बहुत अर्जेंट मैटर है. आई नो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन बट अर्जेंसी उन्होंने क्रिएट की है. सो आई हैव सेंट समवन. सी अगेन सर, इसमें आपको देखना है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि नहीं है. See now this is it was not important for me. Exactly. This is what exactly I want to communicate. The things which are not important for you but they are urgent can be delegated. Important for you. उसके लिए तो बहुत important है, because उसका तो printing रुक गया है, halt हो गया, तो this is most important. उनके लिए crisis है. See, for him it is a crisis. बिकॉज मेरे को ये अभी चेंज करना है और अभी मेरे को प्रिंट लेना है. सो लेकिन आपके लिए इट इज़ लो इम्पोर्टेंस. आपके लिए उनको प्रिंटर चल रहा है नहीं चल रहा है, इट डज नॉट मैटर. ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट यू कैन डेलीगेट. दैट्स एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ऐसे काम जो कि अर्जेंसी हाई है और उनकी इंपॉर्टेंस आपके लिए कम है, आपके लिए दैट कैन बी डेलीगेटेड, राइट. सो दीज काइंड ऑफ वर्क्स can be delegated well. Now we come to the last quadrant. Now the last quadrant is least important and least urgent. अर्जेंसी बहुत कम है, टाइम ही टाइम है, और इम्पोर्टेंस तो है ही नहीं, मतलब इट इज़ ऑल्सो लीस्ट. ऐसे कोई टास्क आपको याद आते हैं? कौन से हैं? कैन समबडी टेल्स? मूवी वॉचिंग सर. मूवी वॉचिंग. ओके. Change the desktop background, sir. Clean social media. Social media, isn't it? Social media is one of the very least important, unless I mean I'm not talking about see, आजकल social media is also really good and helping teams to work together and communication becomes faster and all that is there. So वो जो benefit है वो तो है ही, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर WhatsApp में हम घुस गए और एक ग्रुप में हमने किसी को रिप्लाई दे दिया कुछ और उस पर काउंटर रिप्लाई आ गया, तो हमारा 1 घंटा आराम से पास हो जाता है. तो वी कीप ऑन प्लेइंग टेबल टेनिस. हम कुछ बोलते हैं, वो कुछ बोलता है, मीनिंग कुछ नहीं होता. सो वी आर जस्ट वेस्टिंग दोज टाइम. सो वन इज़ द सोशल मीडिया.
then you have all these serials, you know. मतलब I really मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को सरप्राइज भी नहीं होता और मेरे को मतलब एस्टॉनिश्ड होता है. आई वॉज इन बैंगलोर इन 2001, 21 साल पहले, 21 ईयर्स बैक. एक सीरियल आता था, अक्षरा उसके अंदर थी. उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा. द एक्ट्रेस नेम इज़ अक्षरा. उसका नाम आज भी अक्षरा ही है शायद. कितने अच्छे लगते हैं या कुछ समथिंग लाइक दैट, यू नो दैट काइंड ऑफ सीरियल. नहीं, बड़े अच्छे वाले नहीं, वो कोई दूसरा है. 21 साल से वो सीरियल चलता आ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. वो अरे उसकी स्टोरी का एंड ही नहीं हो रही है. आई डोंट नो वेयर इट इज़ गोइंग टू गो, राइट. सो काइंड ऑफ सीरियल्स विच हैज़ नो adding value to your life, you should not enter into that kind of venture. अच्छा, मैं इसमें ना आपको एक बात कहूँगा. sometimes you need to unwind. जैसा होता है ना, बोलते हैं ना लोग, यार मेरे को बहुत प्रेशर हो रहा है आज, मेरे को आई वांट टू हैव सम बियर इन द इवनिंग. मतलब उनका मतलब क्या होता है कि दे वांट टू अनवाइंड. मतलब सब कुछ मिटा दो, फिर से प्लेन स्लेट को प्लेन कर दो, और देन आई विल स्टार्ट राइटिंग. अगर ये कोई सीरियल्स या मूवीज़ या प्ले या एनीथिंग एल्स, मैच या कुछ भी आपको अनवाइंड करता है, यू रिमेंबर स्लीप. आई हैड अ वेरी प्लेजेंट स्लीप. इफ़ दैट हेल्प्स यू रिलैक्स, बिकॉज रिलैक्सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो वो रिलैक्सेशन आप किसी में भी ढूंढ सकते हैं. आप वो सीरियल में ढूंढ सकते हैं, आप क्रिकेट मैच में ढूंढ सकते हैं, आप फुटबॉल मैच में ढूंढ सकते हैं, आप किसी कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन में ढूंढ सकते हैं, या जेमिनी हरियाणवी को आप सुन सकते हैं. दैट विल अनवाइंड यू, दैट विल रिलैक्स यू, राइट. इफ़ दैट इज डन टू यू, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज रिलैक्सेशन, अनवाइंडिंग, de-stressing is linked to your health. And health for you is the most important. So see how it is. So even if you are watching a football match or a stand-up comedian and it is relaxing you, it is de-stressing you, it is adding to your health, which is your most important task, right? So continue. Don't stop that. So you should not. But yes, other things which you think social media mein, ping pong khelna and watching serials which has no adding values, so that you can, what you can do is, and of course distractions and all that. Suppose if you are working, आप बिल्कुल focus, जैसे मैंने बताया, रात के 10 से 1 बजे तक काम करना और सुबह 4 से 6 बजे तक काम करना. सो 4 से 6 में आपका फोकस लेवल, कंसंट्रेशन लेवल इज़ मच हायर. तो जब आप काम कर रहे थे, किसी चीज़ में एनग्रॉस्ड होते हैं, तो आपका फोकस लेवल इज़ वेरी हाई. और अगर उसमें कोई आपको अड़ंगी लगा दे, मतलब जो आपका थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, कोई आ जाए आपके पास, अनवांटेड पर्सन और मे बी समबडी आपको डिस्टर्ब कर दे, तो टू कम बैक टू दैट सेम फोकस, इट टेक्स टाइम. सो यू आर वेस्टिंग टाइम. सो जब भी आप कोई इंपॉर्टेंट काम करें, होता है ना कि हम अपना कमरा बंद करके भैया कोई डिस्टर्ब हमें ना करे, या आप अपना एक बोर्ड लगा दीजिए, जस्ट राइट इट ऑन, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब. सो एनीबडी विल अंडरस्टैंड कि यार इस वक्त मेरे को इस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करना है, समथिंग लाइक दैट. सो दैट विल सेव क्वाइट लॉट ऑफ योर टाइम. सो ऐसी चीज़ में हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ में हमें इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है. तो इफ़ देर आर एनी लो इम्पॉर्टेंस, लो अर्जेंसी थिंग्स दैट वी नीड टू अवॉइड. नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ इट इज, what I would advise you is that when you have some free time, make these 4 quadrants and write your task, personal or professional. You can mix it, no problem, because the task may be little different, but उनका connectivity बहुत है आपस में. Professional and personal life जो है, they are interconnected.
इंटरकनेक्टेड। मतलब क्या है कि अगर पर्सनल लाइफ में आपके रिलेशंस अच्छे हैं, वाइफ से आपके रिलेशन अच्छे हैं, पेरेंट्स से अच्छे हैं, बच्चों के अच्छे हैं, देर आर मोर चांसेस, प्रोबेबिलिटी दैट योर रिलेशन विद द बॉस, योर रिलेशन विद द कलीग्स, योर रिलेशन विद द सबॉर्डिनेट्स विल ऑल्सो बी बेटर, so they are interlinked. So make a quadrant and put your task, कि कौन सा हाई इंपॉर्टेंट हाई अर्जेंसी में आता है, कौन सा हाई इंपॉर्टेंट लो अर्जेंसी में आता है, कौन सा लो इंपॉर्टेंट लो अर्जेंसी में आता है, और कौन सा लो इंपॉर्टेंट एंड हाई अर्जेंसी में आता है। तो इनमें आप करिए। और जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे, अपना पूरा 24 आवर्स को इसमें प्लॉट कर देंगे, राइट, 24 आवर्स के ही टास्क इसमें प्लॉट होंगे, जो आपके दिन में आप जो करते हैं, दैट विल गेट प्लॉटेड हेयर। द फर्स्ट एडवाइस इज डू नॉट लेट एनी टास्क कम हेयर। सो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट हमेशा खाली रखना है, और दुआ करना कि लाइफ जब तक आपकी चलती है, टिल यू लीव दिस प्लेस, you face no crisis, right? So no task should come in the first quadrant. Second quadrant, as we discussed, we need to delegate. And the third quadrant, stop doing it, stop doing these tasks. And this is the third quadrant, let someone do these tasks for you. Now you see the beauty. आपने पहले अपने 24 आवर्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। उन 4 हिस्सों में जो भी कुछ भी आपके आएंगे, क्राइसिस तो आएगा नहीं, लेकिन फर्स्ट सेकंड नीचे वाले 2 क्वाड्रेंट आएंगे, उसमें कुछ टास्क होंगे, और आप ये रियलाइज़ करेंगे कि यार ये जो यहाँ पे डेलीगेशन वाला है, वो तो कोई और भी कर सकता है, तो व्हाई आई एम डूइंग दिस, सो वहाँ पे आप डेलीगेट करेंगे। डेलीगेशन इज़ ऑल्सो लीडर का एक बहुत अच्छा क्वालिटी होता है। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट के टास्क हैं, उनको आपको करना ही नहीं है। व्हाट रिमेन्स इज़ द टास्क विच आर हाईली इम्पॉर्टेंट फॉर यू as a person, which are highly important for you as a professional, वो टास्क यहाँ पे आएंगे। वो जो टास्क होंगे आपके गोल्डन लेटर से लिखे जाएंगे, और उन टास्क पे आप फोकस करेंगे, बाकी आपके तीनों क्वाड्रेंट, आपका बैंक बैलेंस होगा खाली, वहाँ पे आपके कोई टास्क नहीं होंगे, राइट? सो इफ़ यू फोकस ऑन योर लाइफ, चाहे वो स्टूडेंट, नाउ दिस इज़ वेरी ट्रू फॉर एनी फील्ड ऑफ लाइफ, कोई भी, चाहे आप बच्चे हों, स्टूडेंट हों, यंग प्रोफेशनल्स हों, रिटायर्ड पर्सन हो, ओल्ड एज हो, कोई भी हो, योर फोकस of your 24 hours will be here in this quadrant, high importance, low urgency. If you do that, you will see that आप बोलेंगे, आप कभी किसी को नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, right? You will never say this word. Okay. Second thing, to achieve this is to be honest with you, with yourself, so don't cheat anytime yourself. अपने आप को चीट मत, दूसरे की बात नहीं कर रहा मैं, now I'm focusing. Sir, one doubt, sir. Yeah, please. Sir, sir, one doubt, where do we have work where our work is dependent on somebody else? Yeah. So in that area, how do we need to deal with this when you're talking about this high importance, high urgency and all? So how, because if you have a predecessor who has not done his work and the immediate person who is me, who is a victim for it, so what, in that case, what I am supposed to do it? How should I deal the situation? Okay. So your voice was little stammering because of the net connection, but what I could hear is that if your predecessor has not completed the task, right, then what you will do, correct? Yes, sir. Okay. See, now you have to see जो predecessor ने आपका काम छोड़ के गए हैं आपके लिए, अगर आप वो नहीं करेंगे तो how much will it impact your life, professional life or personal life, whatever. So if it is an office, so how much professionally it will affect you? Can it take the increment from you? Can it take the promotion from you? If it, then it becomes highly important, and highly urgent.
बिकॉज इट बिकम्स अ क्राइसिस कि आपको ये पहले करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप पुराना हिसाब चुकता नहीं करेंगे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, यू नो, सो यू विल नॉट बी एबल टू प्रोसीड. इफ दैट इज अ सिचुएशन, इट इज अ क्राइसिस, एंड इफ इट इज अ क्राइसिस, डू इट, यू हैव टू डू इट राइट अवे, राइट. सो मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कोई आ जाता है तो उसको हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो करना ही करना है, राइट. Sir, as you said, actually, Yeah, please. sir, when you're saying that we need to do it ourselves, what happens to avoid to come to that crisis? At times, the time is spent only on following up with people only to avoid the situation going to crisis. So, is it the right thing to do that way? Each time following people, karo, with, you understand what I'm saying, no, sir? No, so that is a different thing. What's your name, please? Mahesh, sir. Mahesh, see, क्या है? Now that is the leadership quality of yours to get the work done from people, what work you want to do it, so that they love to do it. Okay, sir. I getting me? Now, Yes, sir. आपको अपना काम दूसरों से कराना है जो आपका काम है, और वो जो दूसरे जो इस काम को करें तो दे शुड लव टू डू इट. Now that is the leadership quality. Now how it comes is that you have to generate interest in people. You have to generate interest कि यार ये काम करने से उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, you know. So हर अगर जैसे क्या होता है, आप देखेंगे, आई एम टेकिंग एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल. डिफेंस के लोग जो होते हैं, डिफेंस पीपल, उनको मोटिवेट किया जाता है कि दे शुड डाई फॉर द कंट्री, दे शुड डाई फॉर द कंट्री, एंड दे डाई फॉर द कंट्री. मतलब आज तक मेरे को, मैं आई हैव लॉट ऑफ यू नो डिफेंस पीपल फ्रेंड, लेकिन किसी ने मेरे को आज तक ये कन्विंसिंगली आंसर नहीं दिया है कि उनको ऐसी क्या ट्रेनिंग दी जाती है कि दे गिव देयर लाइफ फॉर द कंट्री. आई हैव नॉट अंडरस्टूड. सो what I get is that they are highly motivated to give their life. Let me tell you, हमारा टाइम होता है 9 से 5, मतलब हमारा जो ऑफिस आवर्स होते थे 9 to 5. Now there was a boss, he said, please YK, you please stay till 6 o'clock today. Oh my god, I cursed him. क्या मैं यार, what kind of a person he is. मतलब मेरे को घर जाना है, माई वाइफ इज़ वेटिंग, माई वाइफ इज़ ऑल्सो वर्किंग, वी कम होम. वो जो 5 बजे हम 5:30 बजे जो घर आते हैं, और 5:30 से 6:30 चाय एंड पकौड़ेज एंड यू नो वी स्पेंड टाइम दैट टुगेदर, दैट आई विल मिस इट. एंड आई वाज कर्सिंग हिम. ऑन द कंट्रारी, द डिफरेंट बॉस, he made us work in midnight, and we were lovingly working. हम खुद मतलब मन से काम कर रहे थे. So that's a difference, you know, how you get people motivated to work for you. That's a leadership quality. So that has, you know, a lot of other attributes attached, you know, how we motivate people, right? So that way, I hope, Mahesh, a little bit I could have, you know, touched on your issue. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. So, being honest with you, this is what I mentioned, that never compromise on sleep. चाहे आप कोई भी स्टेज में हो, आप यंग स्टेज में हो, ओल्ड स्टेज में हो, मिडल एज में हो, आप कुछ भी करिए, यू नो, प्लीज़ लीव एवरीथिंग. जो भी आपकी टेंशन्स हैं, actually I would have taken you know, but due to shortage of time I could not take things which are under your control, direct control, and things which are not in your control, right? So दो तरह की चीज़ें होती हैं. जो आपके कंट्रोल में है आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट? फैन तेज़ करना है, कम करना है, लाइट बंद करनी है, आपको पता है स्विच है एंड आई कैन डू इट. बट टेम्परेचर -11 -1 चला गया, उसको 6 कर दूं, आप नहीं कर सकते, राइट? इजंट इट? विंटर है, दिल्ली में ठंड पड़ रही है, यू नो 6 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है ना, हम उसको चेंज नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं, हम वी चेंज आवर सेल्फ, वी वियर वार्म क्लोथ्स, राइट? बट आई डोंट क्रिब, यार आज तो बहुत ठंड हो गई तो आज मैं सोऊंगा नहीं, यू नो, समथिंग लाइक दैट. तो ऐसा नहीं होता है. तो व्हाट वी डू इज वी टेक टू द बेड ओनली आवर सेल्फ, नथिंग. अगर कोई प्रॉब्लम है आपको, प्लीज़ सॉल्व दैट इफ़ यू कैन डू इट. अगर वो प्रॉब्लम आपके सोल्यूशन के अंडर में है तो. अगर नहीं है तो डोंट वरी,
बिकॉज दैट एनी हाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग. वो किसी और के कंट्रोल में है. अगर वो कोई चीज़ किसी और के कंट्रोल में है तो आप या तो आप उसको इन्फ्लुएंस करिए, कन्विंस करिए, प्रॉब्लम सॉल्व करिए. अदरवाइज फॉरगेट अबाउट दैट. डोंट कैरी एनी प्रॉब्लम्स टू द बेड विथ यू, राइट, एंड हैव अ प्लेजेंट स्लीप, डीप स्लीप. ऐसा नहीं ये आँख खुल गई है ना 10 बार आप उठ रहे हैं, ऐसा नहीं. यू शुड हैव द कॉन्स्टेंट स्लीप. वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर हेल्थ, for your work, for your organization, for your organization skills, for everybody, the sleep is very, I don't know, I'm stressing too much, but it is required. Lack of sleep is lack of focus, then distractions. When you are doing long work, please take a break. Now this is a different break. This is not the break given by the intruder. जो बार्जिन करता है वो अलग है, वो आपका फोकस खराब कर देगा. ये जो ब्रेक है आप अपने मन से ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं. सो दैट विल रिजुनोवेट यू, इट विल ब्रिंग बेटर एनर्जी इन यू. सो हैव अ ब्रेक. यप, टी ब्रेक सर. टी ब्रेक, ओके. So can I take 5 minutes more? At least I'll finish it off. Just I'll quickly finish it off. We say procrastination is a thief of time. ये जो जैसे कई धीरेन्द्र जी ने बताया शायद कि वो करते हैं, फाइलें पड़ी रहती हैं, टालते हैं. हम कोई डिसीजन ले सकते हैं लेकिन वो लेते नहीं हैं, उसको टाल देते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन. प्रोक्रास्टिनेशन मतलब चीज़ों को टालना. सो इट्स बैड. डू यू बिलीव इट इज़ बैड? एवरीबडी बिलीव्स दैट दिस इज़ बैड, बट एक्चुअली क्या होता है कि जितने भी बिग डिसीजंस हैं, ऑल बिग डिसीजंस लाइक योर मैरिज, लाइक योर बाइंग द हाउस, टेकिंग अप अ जॉब, ऑल बिग डिसीजंस हैज़ टू बी गिवन टाइम, राइट. उनको आप टाइम देते हैं. लाइक आपने किसी को देखा, नॉट नेक्स्ट डे यू से ओके आई विल मैरी यू. सो यू टेक टाइम, 1 month, 2 months, 3 months. सो ऑल बिग डिसीजंस हैज़ टू बी प्रोकास्टिनेटेड, not to be taken immediately, right? So that is one thing. We don't take big decisions with the flip of coin. Head आया तो इससे marriage, tail आया तो उससे marriage, right? We don't do that. So all big decisions. And this is one last thing I want to tell you. This kind of thing. 3 balls, 16 runs. Dhoni is known for best finisher. This is 16 runs in 5 overs. Now, if you have to choose, which one would you like to watch more? Please don't go on the face, but this situation, Dhoni situation, or this situation? Dhoni situation, right? So you would like to go for this situation. Now if you are given that you should be in a situation, which one will you choose? This one or this one? मिथाली राज. मिथाली राज. See, this is what happened. हमें मज़ा आता है दूसरों को प्रेशर में डालने. we enjoy when we see people under pressure. मेरे साथ भी हुआ था. मेरा एक बॉस था, इतना प्रेशर डाला ना बॉस उसने कि मतलब मेरे को ये हो गया कि अगले दिन मैं रेजिग्नेशन कर दे के नेस्ले से एंड आई लीव दिस जॉब. इतना प्रेशर डाला उसने मेरे को. Now I'll tell you. 3 balls, 16 runs. Now, if you want to win, first ball 6, second ball 6, third ball you can hit 4. But will you hit 4? No. तुमको लगेगा साला किसी ने रोक लिया तो. So I will also go third ball for 6. At least you will try for 6, right? Now you see, in cricketing, 3 balls, 3 sixes is the best somebody can achieve, isn't it? When under pressure, you deliver your best. If somebody puts pressure on you, that means he's bringing out best in you, your best. And believe me, hand on my heart, I had many bosses, lovely bosses. They made my life, they made me feel very good. And this boss, he made me feel very bad, but only he taught me. The boss who put pressure on me, today I salute that boss, that he put pressure on me and he could make man out of me.
right? So anybody, if he puts pressure on you, that means he is bringing best out of you. So that is all. Just closing my presentation with a message. The message is the monk advice. Once there was a sadhu, he was roaming in the cities. There was a millionaire who had a severe eye pain. बहुत ज़बरदस्त उसको दर्द था. He showed to doctors, foreign के doctors, Indian doctors, सबको दिखाया. Everybody failed. They could not cure his eye pain. So they said, यार हमारे यहाँ पे एक monk आया हुआ है, साधु आया हुआ है, इन सबको दिखाया, एटलीस्ट उनको भी बुला लेते हैं. So they call that sadhu to their house and they say कि हमारे साहब को आँख में बहुत दर्द है. तो उनको देखता है and he says मैं ये दर्द ठीक कर सकता हूँ. कहते हैं अच्छा, वो सारे डॉक्टर फेल हो गए. साधु कहते हैं मैं ठीक कर सकता हूँ, क्या करना होगा? He says next 6 month आपको सिर्फ ग्रीन चीज़ देखनी है, सिर्फ ग्रीन चीज़ देखनी, उसके अलावा कुछ नहीं देखना. अगर आप ये कर सकते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका ये पेन चला जाएगा. Oh my God, he was a millionaire. They ordered all green paint. ट्रक के ट्रक उन्होंने मंगाए और एवरीथिंग दे पेंटेड ग्रीन, एवरीथिंग. इवन जो ब्राउन ग्रास थी उसको भी उन्होंने हरा ग्रास कर दिया. जितना कर सकते थे दे डिड इट. एंड टू देयर सरप्राइज दिस मैन स्टार्टेड improving. So after 3 months, this monk was passing through the same city and he said, let me check how is my patient जिसको मैंने advice किया था. He goes to their house and as he goes, their people come with a paint, green paint, and they pour on him. And he says, what are you doing? He says, sir, आपने जो एडवाइस दिया था हमारे बॉस को कि उनको सिर्फ हरी चीज़ देखनी है और उनसे 3 महीने के अंदर उनको बहुत फ़ायदा हुआ है, तो आपने तो गेहूं रंग के कपड़े पहने हैं तो आपको तो जा नहीं सकते, इसलिए आपको ग्रीन करके भेजना पड़ेगा. मॉन्क सेड, ओ माय गॉड, आपको सिर्फ एक चश्मा लेना था हरे रंग का. अगर आप उनको चश्मा पहना देते तो उनको सारी दुनिया हरी नज़र आती. ये क्या किया आपने? यू नो, they try to change the world and that is what exactly we do. We try to change the world, but the success lies in change what is possible, that is you. If you change, the world will look different to you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. Thank you, sir. Yeah, take care. So now you can break for tea and thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Yes. And all the best for your future. Thank you.